तो ये उनके रिकॉर्ड ही कर रहे थे। अच्छा, last time what we were discussing was that we had already done crisscross, ठीक है, which was that I had discussed के वो previous chemical bonding see metals form positive ion, non-metals form negative ions. You've got group 1, group 2, group 3, they are mostly metals, so +1, +2, +3 ions, and 4, 5, 6 and so on जो है that they form negative ions, ठीक है। So you should know कि what is the charge on each of the ion, और फिर उनका जो formula था that was made using the crisscross method, ठीक है, कि if you know what the charge on the substance is, so for example if you know you've got barium and phosphorus, a metal, and we are dealing with an ionic compound, so you've got barium and phosphorus. The barium is group 2, so उसका क्या charge होगा? It's going to be +2, and phosphorus is group 5, so it's going to be -3. Group 2 का मतलब है it loses how many electrons? Loses 2 electrons. Phosphorus is the one that gains 3 electrons. So the ratio of the ions in the ionic lattice is going to be वो आप crisscross करते थे, ठीक है? There was a simple way of finding the ratio, which was K. In numbers को ना you just barium would be, there would be 3 bariums and there would be 2 phosphoruses. क्योंकि if you have 3 bariums and if you have 2 phosphoruses, then the number of electrons gained and the number of electrons lost, that becomes equal. So there was a simple method जो कि crisscross था, ठीक है, we did that, और इसका जो नाम था, this would be barium. And remember कि the negative ion, its name would change and उसका जो end होगा ना, that would be ide, ठीक है। So the name of the negative ion would change, ठीक है। दुआ पूर्णिमा, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, plus we also did polyatomic ions, which was that there were molecules, ठीक है, you've got atoms gaining and losing electrons, but then there were molecules that would also end up gaining and losing electrons, and they would end up forming ions. तो उसका एक वो एग्जाम्पल मैं दोबारा कर लेता हूँ कि like if you have oxygen, which is a non-metal, so oxygen has 6 electrons, which means that it needs 2 electrons. Oxygen is a non-metal. Non-metals always try to gain electrons. So oxygen, oxygen over here has 6 electrons. तो उससे क्या होता है? विशाल ने ज्वाइन किया, एक सेकेंड। अच्छा, so oxygen had 6 electrons. It needed 2 electrons. तो अगर आपके पास है, you have hydrogen atoms. So what do the hydrogen atoms do? Okay, hydrogen has only 1 electron. The other hydrogen atom also has 1 electron. So oxygen जो है उनके electrons को, it's going to attract its electrons and it will try and bond with them. So when it tries to do that, okay, when it tries to bond with them, so in that case, hydrogen is a non-metal as well, so it's not going to lose electrons. Only metals lose electrons. Metals are not attracted to the electrons. So the whole hydrogen atom comes along. Okay, when oxygen tries to pull its electrons, so it's like oxygen is trying to steal electrons from hydrogen, but hydrogen is not letting go of its electron. Okay, खाली metal होते हैं which are not attracted to the electrons that much. So this is a normal covalent molecule, and that's water. Okay, but sometimes what happens is, अच्छा मिशाल, आपको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा मिशाल, आपका आपका क्या 7:15 would it work for you? Yeah. बस ठीक है, फिर 7:15 to 8, right? हाँ, अब 8 है ना कट ऑफ आपका, Okay. 8 o'clock, 8 जी o'clock, सर। बस ठीक है, 7:15 पे कर लेते हैं, ठीक है। जी जी। ये बस बाकी 2-3 का पूछ रहे, तो फिर we'll settle at 7:15, ठीक है।
अच्छा, एनीवेज ये वाटर का था। ये मैं कहता था कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज नो सेकंड हाइड्रोजन, सॉरी मैं, अच्छा समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये स्क्रीन नजर आ रही थी पहले? Yes, sir. अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज नो सेकंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इंस्टेड यू हैव अ मेटल, ठीक है, लाइक लिथियम। तो अगर वो लिथियम की तरह एक मेटल होगा, नाउ लिथियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स, उसका 3 प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, सो इट्स गॉट जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स अ मेटल, ठीक है। रिमेंबर मेटल्स, they don't really attract their electrons very strongly. तो ये आपके पास lithium है and lithium has 3 electrons. So just like hydrogen, जिस तरह oxygen has attracted hydrogen, uh, this oxygen still needs 1 electron, so it will try to attract electrons from lithium. But the thing with lithium is that lithium is a metal. Metals, they easily lose electrons. So when oxygen tries to attract that electron, lithium would lose its entire outer shell and that electron will end up with oxygen. And as a result, ये जो आपका lithium है ना, that's going to be +1. And this OH will then therefore be, it's going to be -1. ठीक है? क्योंकि it has ended up, so it was a molecule that has actually ended up gaining electrons. Sir, so do we call it covalent bonding or ionic bonding? अब इसमें दोनों हो गए ना, क्योंकि वो जो Okay. ऑक्सीजन था ना, दैट वाज ट्राइंग टू इट, उसने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, ठीक है। सो व्हाट इट डिड वाज कि वो नॉन मेटल्स के साथ तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, द होल नॉन मेटल विल कम अलोंग, राइट, विद इट। तो उधर से लिथियम के साथ भी उसने वही किया, लेकिन लिथियम इज अ मेटल, सो द मेटल्स दे ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म्स एन आयन। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, दिस इज लाइक इट्स लाइक अ कोवलेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज नाउ एन आयन, सो बेसिकली इट्स नाउ एन, इट्स आल्सो फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये मैंने बस बैकग्राउंड देना था फॉर हाउ polyatomic ions get formed. They're basically molecules that end up ये OH -1 है. This is known as hydroxide, ठीक है? And that's how polyatomic ions they get formed. अब details are not important for you at the moment, ठीक है? No one is, I'm pretty confident no one is going to ask about all of the details behind how a polyatomic ion gets formed. आपको बस idea होना चाहिए कि there was a molecule that was trying to complete its outer shell electrons and all of a sudden it ended up gaining or losing electrons, ठीक है? ये clear है? Yes, sir. अच्छा, अब ये मिसाल clear है? Yes, sir. तो अब ये कि what you need to know is you need to remember all of the names of polyatomic ions by heart, ठीक है? मतलब this is like fundamental ABC of chemistry. You need to know कि what's a hydroxide, what's a sulfate, what's a carbonate, what's a nitrate, ठीक है? Phosphate, ammonium, nitrite, sulfide, phosphide, hydrogen carbonate, hydrogen sulfate, dichromate 6, or magnet 7, ठीक है? I mean, it should be on your fingertips. Okay, if somebody says sodium carbonate, you should know what a carbonate is. तो बाकी वही आपने क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है? यू नीड टू डू क्रिस क्रॉस, हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो लाइक if I do a few more, I've got barium hydrogen carbonate. So you should know that barium is group 2, so barium is going to be +2. Hydrogen carbonate जो है ना, that's वो उस लिस्ट में ना, that's HCO3 -1, ठीक है? So if you do crisscross, there would be 1 barium, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के होंगे, that's going to be twice, ठीक है? और रिमेंबर ये रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ इन विच द आयंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द लैटिस, ठीक है? वो लैटिस वही है कि वो हमने पहले किया था लैटिस, कितने क्या हमारा लैटिस एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। सो आई इससे पहले किया था, आई थिंक इज द लैटिस के, हाँ,
So remember, the ionic lattices, it's a bunch of positive and negative ions all attracted to each other. Or the formula of the ionic compound is always, it tells you the ratio, the simplest ratio in which the ions are present in the lattice structure, ठीक है? तो ये क्लियर है ना, ये हमने किया था लास्ट टाइम. इज दिस क्लियर? Yes. Yes. ठीक है. But we're going to come back to this, ठीक है, because we have to make equations. अच्छा, फिर we had started with the discussion on acids and bases, and I told you that acid or bases, when I told you that an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. ठीक है. Proton is what? A proton is an H+1 ion. And that's basically the definition. Okay, if somebody is going to ask you, that's known as the Bronsted-Lowry acid-base definition. There are many acid-base definitions out there. आप लोगों को जो important है, that's Bronsted-Lowry acid-base. So acid is a proton donor, base is a proton acceptor, and that's it. So acid is a molecule that gives off H+1 ions, base is a molecule that accepts H+1 ions. और फिर वो मैंने explain किया था कि why is H+1 important? तो उसकी explanation में ये था कि it's not really H+1 that's important, ठीक है? It's actually H+1 and OH ions, both of them are important, ठीक है? और उससे भी ज्यादा important, it's actually water that's important, ठीक है? Planet Earth के ऊपर मैंने explain किया था कि why, इसके ऊपर ही कर लें. तो मैंने explain किया था why is chemistry happening on planet Earth and why is no reactions taking place on let's say Mars or वो जो बाकी planets हैं, moon के ऊपर, why don't you see reactions happening right over there? So the reason for that was that if you have two particles A and B, and whatever they want to do, whether they want to lose electrons, gain electrons, share electrons, ठीक है, chemical reaction में यही होता है ना, it's either they're losing electrons or sharing electrons or something like that, ठीक है? But they won't be able to do that because they're never going to meet, ठीक है? Moon के ऊपर ना particles are not colliding with each other. And why are they not colliding with each other? Because there is no liquid which is carrying them. ठीक है? Earth के ऊपर है कि 70% of the Earth's crust is water. All living organisms are mostly water. ठीक है? We've got water constantly flowing through our system, ठीक है, which are taking particles from one point to the other point. So all these particles A and B, the reason they're able to move around and they're going to meet each other is because of water. ठीक है? आपका blood जो है, that's all water. ठीक है? It's circulating, taking particles from one side to the other and carrying nutrients and dissolved oxygen to your cells. ठीक है? And carrying the waste product away from your cells. तो water important है. और फिर मैंने explain किया था कि problem ये कि water is not just water because like if you have a lot of water molecules, the water itself is going to be involved in the reaction somehow. ठीक है? Plants, animals, everything around us, it all constantly needs water. ठीक है? अच्छा, the problem ये आती थी कि water is not just water. Some of the water molecules during collisions, they're going to break up and they're going to form two ions. One of them is going to be H+1 and the other one is going to be OH ion. So the water molecule tends to dissociate or ionize. ठीक है? यानी यहाँ पे लिख देते हैं water ionizes and it produces two ions. One is H+1 and the other one is OH-1. तो खाली H+1 important नहीं है. OH ion is also equally important. ठीक है? Both of them get produced. So there might be another water molecule that dissociates and ionizes and it produces another. So whenever you see water, it's not just water, it's actually there's some H+1 and OH ions in it as well. Or weak ionization. It's not that all of it breaks up, just a little bit. ठीक है? ये भी clear है? Yes, sir. अच्छा, so what happens is कि since all reactions are happening in water, normal water ionizes and produces
equal amounts of H plus 1 and OH ions. तो आपका जो पानी होगा ना, it's going to have equal amounts of H plus 1 and OH ions, and you're going to call it neutral pH. ठीक है, which is known as pH 7. ठीक है. अच्छा, फिर क्या होता है कि the same water which is kind of everywhere, अगर उस water के अंदर ना you add an acid molecule. So acid is a molecule that does what? Let's say ये एक बीच में ना, there's a molecule of an acid that's been added. अच्छा, what does an acid do? It starts to produce H positive ions. तो जहां पे भी acid होगा ना, the amount of H plus 1 ions will increase because the acid is going to produce a lot of H plus 1 ions, और जब वो increase होता है तो you're going to call it that the solution has become acidic. So acids make the solution acidic. What does that mean? कि the amount of H plus 1 ions is now higher compared to the amount of OH ions. और वाइस वर्सा, अगर आप बेस ऐड कर दो ना, बेस क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स H plus 1 ions. It gets rid of H plus 1 ions. So if you add a base to water, then the amount of H plus 1 ions in the solution will decrease and the amount of OH ions will go up. ठीक है, तो आपके पास OH ions ज्यादा हो जाएंगे, and that's going to be called basic. ठीक है, तो पानी जो होता है, water जो होता है, that's of three types. Either it's neutral, H plus 1 and OH ions are equal. एक second. अच्छा, either it's going to be acidic, so the higher the concentration of H plus 1, the more acidic it's going to be, or it's going to be basic. अच्छा, वो ट्रैक जो है ना, वो सिर्फ आप pH करते हो, क्योंकि it's understood कि OH ion would be doing exactly the opposite. ठीक है, क्या आपको पता होना चाहिए if it's becoming more acidic, that means the OH ions are also going down. If it's becoming more basic, that means the H plus 1 is going down and the OH ions are going up. ठीक है, तो ये आइडिया क्लियर है कि pH का लिंक जो है वाटर के साथ, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मिशाल क्लियर, दुआ क्लियर है आपको? जी सर. Yes. अच्छा, फिर ये pH स्केल है. अच्छा, pH का भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि pH जो है ना, pH that's I mean you don't need to know what pH is. ठीक है, वो वैसे just for general understanding, because it can appear in a number of places and in a number of subjects as well. Normally in science, what you do is you have log values. ठीक है, log का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बहुत बेसिक सा. ठीक है, you might study in math or maybe you're going to study it later on. There's a button on your calculator that's log. तो pH जो है ना, that's a number. ठीक है, it's a number that indicates कि whether it's acidic or basic or neutral. अच्छा, लेकिन वो होता क्या? What is that number? It's a log value. What's a log value? कि प्रॉब्लम ये होता है कि in science sometimes you get very small numbers and very big numbers. जैसे 0.0001 tetra 01 है 0.1, ये पता नहीं कितना, 100,000 and this is 100, right? So it's very hard to data को ना visualize करना पड़ता है. You have to visualize data, which is why you plot a lot of graphs in science. क्योंकि वरना खाली numbers है ना, your brain doesn't make a lot of sense. If I just give you 1,000 numbers, it would not be able to spot a trend. But if you plot them, it's going to be able to spot a trend. ठीक है, तो data visualization is very important. So what happens is कि you can't plot these four numbers on the same piece of graph paper. Why? क्योंकि it would be very hard, अगर आप graph कभी plot किया ना, it would be very hard to determine the range of the values. क्योंकि एक value बहुत ही छोटी है, this is a very small value and this is a very big value. So इस तरह का data जो होता है ना, where the numbers are like fluctuating a lot, pretty hard to plot them on the same piece of graph paper. ठीक है, ये idea clear है कि plotting मुश्किल होगी इसकी? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो आप करते क्या हो साइंस में, और साइंस में बहुत जगहों पे आप ये करते हो, व्हाट यू डू इज कि यू डोंट प्लॉट दोज वैल्यूज. लॉग क्या करता है, उनको पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर देता है.
कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 पावर -5, दिस इज 10 टू द पावर -1, दिस इज 10 पावर 5 एंड दिस इज 10 पावर 2। तो लॉग क्या कहेगा कि ये -5 है, ये -1 है, 5 एंड 2, राइट? तो व्हेन यू एक्सप्रेस देम इन पावर्स ऑफ 10, तो मैंने एक 10 पावर -5, 10 पावर -1, 10 पावर 5, 10 पावर 2, इनको प्लॉट करना बहुत ईजी है। लाइक -5, -1, 5 एंड 2 ऑन द सेम पीस ऑफ ग्राफ पेपर, दैट इज वेरी इज एक्सट्रीमली ईजी। ठीक है। तो जब आपके नंबर्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं ना, दे जस्ट शिफ्ट टू पावर्स ऑफ 10। तो लॉग ये करता है। तो पीएच जो है ना, दैट्स अ लॉग स्केल। उसमें जो नंबर्स आ रहे होते हैं ना, pH 7, pH 1, pH 2, वो एक्चुअली 10 की पावर्स होती हैं। ठीक है। वो उसका थोड़ा सा मैं आइडिया भी दे देता हूँ कि ये pH 0 का बताऊँ क्या मतलब होता है। दिस इज एक्चुअली 10 पावर 0, विच इज बेसिकली 1 मोल per dm cube। 10 पावर 0 क्या होता है? दैट्स 1 मोल। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल इज 10 पावर -7। ठीक है, विच इज कि आपका जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, दैट वुड बी वेरी लेस, दैट्स गोइंग टू बी दिस। और 10 पर -14, दैट्स हाईली बेसिक। उसमें होता है कि H+1 की कॉन्सेंट्रेशन दैट्स एक्सट्रीमली लो। ठीक है। तो वैसे ही मैंने आइडिया देना था, इफ यू वंडर कि व्हाट इज 0, 7 एंड 14, तो बस रिमेंबर दिस कि द क्लोजर यू आर टू 0, द क्लोजर यू आर टू 0, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। द क्लोजर यू आर टू 14, उतना ज्यादा एसिड कॉन्सेंट्रेशन लो होगी। इट्स गोइंग टू बी मोर बेसिक। ठीक है। तो ये वैसी थोड़ा सा बस बेसिक सा आइडिया देना था कि ये पीएच होता क्या है। ठीक है। जस्ट इन केस यू वंडरिंग, वन अदरवाइज यू डोंट नीड टू नो दिस। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बाकी फिर फॉर्मूलाज आ जाते हैं। ठीक है। फॉर्मूलाज आ कि you've got a lot of equations that revolve around acids and bases। तो उसमें ये कि an acid is something that which we already discussed is something that produces H+O ions। ठीक है। तो उसके फॉर्मूले में उसके पास H+O ions होंगे तो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना। सो ऑल एसिड्स काइंड ऑफ हैव दिस फॉर्मूला। ठीक है। कि एक तो उनके पास ना दे हैव H+O ions, which is why they give off H+O ions। ठीक है। और positive ions never exist alone, so there must be some negative ion that's going to be attached to them। So this is like a general formula for an acid। ठीक है। तो हर एसिड जो है ना, it's got to have H+O ions। So ये सारे acids की लिस्ट है। ठीक है। You can attach an H+1 to any negative ion and that's probably going to be an acid। ठीक है। तो HCl है, HNO3, क्रिस क्रॉस करते जाओ। ठीक है। सल्फेट के साथ इट्स गोइंग टू बी H2SO4, H+1 with PO4-3, that's going to be H3PO4 and so on। ठीक है। और इनके नाम याद रखने हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक, कार्बोनिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रस एंड फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। वो जो जो आयन्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, वो सारे यहाँ पे हैं। ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है। मिशाल, आपको क्लियर है? Yes, sir. तो नॉट ओनली डू यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, स्पेशली द नेम्स ऑफ द एसिड्स, क्योंकि वहां पे इतना टाइम, रिमेंबर के ये वो पॉलीटॉमिक आयन्स थे। You can attach, go on and start attaching H+1 to them। It's just going to start forming acids। ठीक है। और किधर गए हमारे एसिड्स? हाँ। तो और एसिड्स का याद रखा है, ऑल एसिड्स दे व्हेन यू मिक्स देम इन वाटर, तो दे डिसोसिएट इनटू द आयंस। ठीक है। एसिड्स डिसोसिएट इन aqueous स्टेट, यानी अगर आप इफ चम्मच लेके ना, aqueous स्टेट, अगर आप चम्मच लेके ना यू स्टार्ट मिक्सिंग एन एसिड, तो वो जो आयंस है ना which were together they're going to start separating and they're going to dissociate। ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल वाटर होता है ना, उसमें उसमें इक्वल अमाउंट्स होते हैं H+1 and OH आयंस।
But as soon as you add an acid to it, तो ये वाला acid जो है sulfuric acid, that will produce 2H plus ions. It's got 2H plus ions, and it's got 1 SO4 minus 2 ions. So immediately क्या हुआ है? The H plus ion concentration in the solution has gone up. क्योंकि अब आपके पास you've got 3 H plus 1 ions and you've got just 1 OH ion, ठीक है? तो जितना ज़्यादा acid डालते रहोगे, the amount of H plus 1 in the solution will continue to go up, and it's going to become more and more acidic. कोई भी acid डालो, HCl डाल दो, तो वो भी H plus 1 ions produce करेगा. So all of these acids are going to dissociate. So it's important कि you should know कि जब आप phosphoric acid को mix करोगे ना पानी में, तो it's going to produce 3 H plus 1 ions, and बल्कि इधर ही लिख लेते हैं कि so if you mix phosphoric acid in water, so it's going to produce 3 H plus ions and 1. इसमें 2 ions थे, PO4 minus 3 and H plus 1. वो crisscross किया, we figured out that the ratio is going to be 3 H's and 1 PO4. लेकिन याद रखना कि if the ions are separated and they're dissociated, you use the big 3. जब वो जुड़े हुए होते हैं ना, तो you use the small 3, ठीक है? Formula में when they're combined together, so you use the small 3. But when they dissociate and they're separate, you use the big 3, ठीक है? ये clear है? Yes. Yes, sir. HNO3 को अगर पानी में mix करोगे ना, तो it's going to dissociate and it will produce it's only going to produce 1 H plus 1 and 1 NO3 minus 1, ठीक है? HCl को पानी में mix करोगे तो it's going to produce 1 H plus 1 and 1 Cl minus 1, ठीक है? तो ये सारे के सारे they're going to dissociate in water and they will start producing H plus 1 ions, ठीक है? So all of them will produce H plus 1 ions. और फिर यहाँ से ना there's a concept of weak acid and strong acid. What's a strong acid? What's a weak acid? तो strong acid वो होता है जिसको पानी में mix करोगे ना, तो वो ज़्यादा dissociate होता है, because not all the molecules are going to break down into their ions. ठीक है? वो जैसा यहाँ पे नहीं था कि वही जो पिछला देखा था, एक सेकेंड कहाँ पे गया, केमिकल बॉन्डिंग, उसके ना कहीं पे ना डिसॉल्विंग का क्या था. हाँ, तुमने पढ़ा था कि ionic lattices when you mix them in water the ions get scattered, right? लेकिन मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि if the bonds are like really strong, तो the ions will not get scattered that easily. ठीक है? क्या आप चम्मच हिलाओगे तो they're not going to break down or dissociate, ठीक है? They'll not get scattered if the ionic attraction between them, the electrostatic attraction between them is very strong. तो strong acid वो होता है which ionizes fully. So अच्छा, it ionizes fully in aqueous state. And produces more protons, ठीक है? Produces more H positive ions. ठीक है? So that's a strong acid. और strong acids होते कौन से हैं? Strong acids are normally your mineral acids. उसकी एग्जाम्पल में आ जाते ये सारे HCl जितने भी ऊपर लिखे हो ना, they're all strong acids, ठीक है? And vice versa, they're weak acids, which we are not going to study right now क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. So weak acids are कि उनको पानी में जितना मर्जी मिक्स करोगे ना, so not all their molecules are going to break down and they're going to produce H plus ions. Very few of them are going to do that.
कि अगर आपके पास if you have 100 molecules of a weak acid, you mix them in water, तो hardly one of them might break down to produce H plus ions. The other ones, उनके जो ions हैं वो सारे जुड़े रहेंगे, ठीक है? They're not going to break down. So weak acid is by definition something that partially ionizes in aqueous state. And ends up producing fewer H plus ions. ठीक है, तो इसमें और नॉर्मली क्या होता है कि अगर अगर इफ यू गो बैक टू द पीएच स्केल, अच्छा पीएच स्केल में कि नॉर्मली 7 के करीब करीब ना it's going to be a weak acid. The further you are from 7, तो उतने आप स्ट्रांग हो गए, ठीक है? सो एक सेकेंड, अच्छा 7 के करीब हो गए ना, you're probably going to be strong. तो ये जो है दिस इज स्ट्रांग, उतने ज्यादा H plus ions प्रोड्यूस होंगे. Weak acid will not produce a lot of H plus ions. और फिर ये कि the other thing is that what are weak acids? Weak acids are normally organic acids, which we are not going to discuss at the moment, ठीक है? अच्छा, organic acids जो हैं, they are which acids they are? The ones that contain carbon. Organic compounds जो होते हैं ना, वो basically living organisms से related होते हैं, and they're basically carbon based. So we're going to study them in detail in organic chemistry, not right now, ठीक है? अभी फिलहाल just know what a weak acid is. So ये clear है? मिशाल दुआ, Purnima, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. You have to remember कि क्या एक सेकेंड, अच्छा you got to remember the names and the formulas of all these acids. और फिर dissociate करेंगे, you should know कि what ions, because you have to remember the ions as well, ठीक है? मतलब पता होना चाहिए कि PO3 is -3, PO4 is -3, SO4 is -2, NO3 is -1. So you have to remember the ions. अच्छा, anyways, बस last चीज कर रहे थे, coming back to this, कि what's a base, ठीक है? तो base क्या करता है? It accepts H plus ions. It does exactly the opposite. तो anything that bonds with H plus ions, यानी वो उसको आप डालोगे ना अगर पानी में, तो it's going to wipe out the H plus ions, because it's going to grab all the H plus ions and it's going to bind with them, ठीक है? तो वो खुद क्या होगा? It's going to be a negative ion most likely, ठीक है? तो pretty much any negative ion is going to get attracted to H plus 1, but the common ones are, आपके पास ना, you got 4 strong bases. So the common ones are कि एक आपके पास ऑक्साइड है, O-2, उसको पानी में ऐड करोगे, it's going to grab the H plus 1 and form water. OH-1, that will accept H plus 1 and form water. Carbonate है, that's a weak base, it attracts H plus 1 ions. और इसमें जो एक ऑक्सीजन होता है ना, it binds with the H plus 1 ions to form water, and carbon dioxide is left. And then there is ammonia, which is also going to grab an H plus ions and it will form ammonium ions. So all of these 4 things are bases, और उनको कहीं भी H plus ions मिलेंगे ना, they're going to bind with them, ठीक है? They're going to attach the H plus with them
फॉर्मिंग वाटर और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयंस। ठीक है, तो ये बेसिस वाला काम फिर अगली क्लास में करते हैं, और बाकी है कि वी कैन स्टार्ट विद इक्वेशंस एज वेल। ठीक है, जो क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है? बस चलें, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं 7:15 टेंटेटिवली। ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Hafiz.